there are big developments taking place in Uttarkashi where the tunnel had collapsed. It's been 13 days now. The 41 workers are yet to be rescued, but the breakthrough is likely to happen in just a few hours because we're getting to know that the last 6 meters of the pipe that has been inserted into the tunnel is going to reach the workers, after which there is going to be the NDRF and the SDRF teams that are going to enter into the tunnel and rescue and evacuate the workers. Starting my telecast, I am being joined by my colleague, Praveen. Praveen, give us the latest details. The last time you spoke to us, you told us that the auger machines have been put on hold. Has the drilling now started again? देखिए, एक अच्छी खबर ये है कि ये कहा गया कि तकरीबन 5.5 मीटर तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मतलब कोई बाधा नहीं है। लेकिन अभी जो खबर आई है थोड़ा सा चिंतित करने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑगर मशीन ने तकरीबन 2.2 मीटर की ड्रिलिंग की थी। उसके बाद एक बार फिर से कंपन आया है, उसकी वजह से अभी ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है। हम अपने कैमरा सहयोगी को बताएंगे कि यहाँ पे दिखाएं कि ये जो टनल है, टनल के अंदर आप देख सकते हैं रोशनी को, और वहाँ महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है। लेकिन अभी ड्रिलिंग में थोड़ी बाधा आई है और उसकी वजह बताया जा रहा है कि जो ऑगर मशीन की जो आगे की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लेंथ है वो बहुत हैवी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लेटफॉर्म में जो है वो पीछे से प्लेटफॉर्म उठ रहा है और उसकी वजह से अभी थोड़ी डिस्टरबेंस आई है। एक्चुअल डिस्टरबेंस क्या है ये तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा जब आधिकारिक तौर पे बयान जारी होगा। लेकिन 2.2 मीटर की ड्रिलिंग हुई है, उसके बाद फिर से मशीन को रोक दी गई है और ऑगर मशीन अभी रुकी हुई है और जो बाधा है, जो उसमें डिस्टरबेंस है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैपिंग हुई थी, जो रडार से अंदर तकरीबन 5.5 मीटर तक जो है उसकी स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें पता चला था कि 5.5 मीटर तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है। थोड़े बहुत डिस्टरबेंस थे, उसकी वजह से दिक्कतें आती है और जब इस तरह की खुदाई होती है, जब ड्रिलिंग होती है तो उसमें दिक्कत तो आती ही है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये एक पाइप को इंस्टॉल किया जाएगा, इसके बाद एक और पाइप को इंस्टॉल किया जाना है, वो लास्ट पाइप होगा और उस पाइप के इंस्टॉल करने के बाद ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। लेकिन कब तक मिलेगा इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही है। राइट, एब्सोल्युटली। प्रवीण, आप जिसकी बात कर रहे थे कि ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आते जा रहे हैं, जब कल की बात करें ओवरनाइट वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग पता चला था कि ये जो एक और एफर्ट की गई थी, ये जो पाइप को इंसर्ट करने के लिए, ये जो पूरा डिस्टेंस है 1.2 मीटर्स का, इसी में बाधा आ रही है। उसके बाद एक जो इंजीनियर्स को बुलाया था, ये जो वेल्डिंग का काम हुआ जिसमें जो आयरन की मैशेस थी उनको ब्रेक करा, फिर ये एक देयर वाज अ रे ऑफ होप। पर इस समय दोबारा बोला जा रहा है कि ये जो ड्रिलिंग का काम फिर से बंद हो चुका है। कोई ऐसी एस्टिमेट कि ये काम फिर से शुरू कब हो जाएगा? देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कल की जब हम लोग बात करते हैं तो कल इस तरह के, मैं आपको एक उसी का टुकड़ा है जिसको काटा गया अंदर में, ये देखिए सरिये का टुकड़ा है और किस तरह से कितना मोटा टुकड़ा है और इस तरह के पैनल थे बने हुए अलग अलग, कई सारे इस तरह के इसी जो डायमीटर के जो सरिये थे और इसके पैनल बनाए गए थे, जिसकी ये दरअसल ऊपर छत को कंक्रीट के जाल से बनाया जाता है, जो सॉलिड किया जाता है, वहाँ पे इस तरह की कंक्रीट की दीवारों से पहले इसको बनाया जाता है। और ये जो पूरे पैनल जब नीचे गिरा तो जब ड्रिलिंग हो रही थी तो इसी का पैनल जो है सामने आया, उसकी वजह से जो है ऑगर मशीन में भी दिक्कत आई, कंपन बहुत ज़्यादा हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म जो है ऑगर मशीन की वो पीछे से उठ गया और बाद में इन जो ऑगर मशीन को निकाला गया और उसके अंदर से एक्सपर्ट को भेजा गया और पता चला कि इस तरह की वहाँ पे संरचना थी और मोटी जो आप कह सकते हैं मोटे सरिये थे और कई सारे सरिये थे और उसको काटा गया। इसमें जो ह्यूम पाइप के अंदर
गैस कटर ले जाना और उसको उसी में बैठकर उसको काटना, आप समझ सकते कितना मुश्किल भरा काम होता है। और वहाँ पे आपके आसपास ये भी खबरें आ रही थी, ये भी न्यूज में आ रहा था, जो ऑगर मशीन थी उसके their blades had gotten destroyed and then that blade, वो उन blades को replace किया गया। अब I hope there has been no hitch when it comes to the build of the auger machine. बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि पहले सरिये का एक जो कंस्ट्रक्शन आया, जो ऊपर से गिरा हुआ था, एक जाली नुमा संरचना थी, उसको काटा गया, फिर से ऑगर मशीन को चलाया गया। तो पता चला थोड़ी दूर पे ही जो पाइप्स होते हैं, मोटे पाइप्स, उसके पैनल्स थे, कई सारे गिरे हुए थे, उससे टकराकर ऑगर मशीन के जो आगे का पार्ट था, जो आगे के ब्लेड्स थे, वो मुड़ गया था और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आई। और फिर से ऑगर मशीन को बाहर लाया गया, फिर उसमें एक्सपर्ट को भेजा गया, फिर वहाँ पे कटिंग की गई, उस पूरे जो पैनल्स थे उसको हटाया गया काट के गैस कटर से, फिर से ऑगर मशीन को, फिर जो ब्लेड्स थे उसको बदले गए, फिर जो प्लेटफॉर्म, उसकी वजह से ऑगर मशीन काफ़ी देर तक चलती रही, तो प्लेटफॉर्म जो था वो धंस गया था, तो उस प्लेटफॉर्म को सॉलिड किया गया। तो कई स्तर पे दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही विषम परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और इस तरह की परिस्थिति में इस तरह की दिक्कतें आती है। शायद ये दुनिया का शायद ही इस तरह का ऑपरेशन पहले कभी हुआ हो कि आप ह्यूम पाइप डाल के निकालने की बात, और ऐसी परिस्थिति में तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि अलग तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और अब काफ़ी नज़दीक है, ब्रेक थ्रू के काफ़ी नज़दीक है। और ब्रेक थ्रू जब तक मिल नहीं जाता, एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जगह जगह पे इस तरह की चीज़ें आएगी, कभी मशीन रुकेगी, कभी मशीन में कंपन ज़्यादा आएगी, तो लेकिन हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। राइट, एब्सोल्युटली प्रवीण, इसमें यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के ऑफिशियल्स हैं ये मीडिया से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ पे रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुँच सकती हैं, ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ड्रोन्स में GPS द्वारा आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वर्कर्स कहाँ एग्जैक्टली हैं। देखिए, जब ह्यूम पाइप जब इंस्टॉल होगा तो ड्रोन को उसमें भेजा जा सकता है और उसको इंस्टॉल करके, लेकिन अभी जो जानकारी है कि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो 6 इंच की पाइप है उससे लगातार खाना, पानी, दवाइयाँ पहुँचाई जा रही है। साथ में पैरेलली जो अभी ये ड्रिलिंग का काम चल रहा है, ये शुरू हुआ था, अभी कुछ बाधाएं हैं, थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, अभी ड्रिलिंग का काम थोड़ी देर के बाद फिर से शुरू होगा, अगर मशीन शुरू की जाएगी और फिर से ड्रिलिंग मशीन का काम होगा। अब लेकिन इसमें कितना वक्त लगता है ड्रिल करने में, अभी भी तकरीबन 10-12 मीटर का जो फासला है, और रेस्क्यू ऑपरेशन और जो फंसे हुए मजदूरों के बीच इस फासले को कितनी देर में पाटा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। राइट, एब्सोल्युटली। प्रवीण मेरे साथ बने रहिए। प्रवीण in fact is at the tunnel collapse site in Uttarkashi, in the Silkiara part of Uttarkashi, where the workers had entered into the tunnel to dig that entire tunnel out to build that infrastructure project that has at this point in time unfortunately collapsed. On the telecast with me is Krishna Mitru also. He is a disaster management expert. Mr. Mitru, you've heard it from my reporter as well, my colleague who's right now in Uttarkashi, in the Silkiara part of Uttarkashi. Situation is tense. You know, it is the 13th day. We've still not been able to get our workers out. There have been a number of these hiccups by way of the glitches that the auger machine is facing, which goes on to show that it is not an easy task. It's a very strenuous task. Like you have, I don't know how many tons does this machine weigh, how strong and sharp its blades are, and it's still not able to cut through those iron meshes that are installed inside the tunnel. It's definitely astonishing that after having got the American auger machine, which has not worked, the reliability of this machine has now become doubtful, because it has broken down a number of times since it was put into action. A road was built specially to take this machine to the
top the hill, and that was abandoned. It was brought in to drill the horizontal hole into the debris, but yet this has been failing time and again. Of course, I do understand that this machine has its own limitations too, but I am really wondering, do we have only one auger machine in the country? Mm-hmm. Do we have no auger machine anywhere else? Maybe smaller or bigger than that? Maybe something to match with that? Worst comes to worst, I do not know why we have not involved the Metro Rail Corporation engineers to get into this task of drilling the hole in the debris, because to my best understanding, metro rail engineers have a vast experience of drilling the tunnels for the metro rail. And of course, we have the other experts who are on the job, but nevertheless. But also, sir, I would like to keep the conversation focused to at this point on the mammoth effort that is going to save our 41 workers. Yes, we can, then look back after the rescue operations get completed, they are successful, and then look back at what went wrong and were the SOPs put in place. What about these machines? Is there a possibility of building the indigenized machines, which could be then much more strong as compared to the foreign brought machines? So, I mean, but the fact at this point, the fact that we have about 52 of these doctors at this point in time are deployed. There are 41 or 42 of the ambulances. There have been as many number of stretchers as there are these workers that are entrapped. We have our chief minister over there. There was our union minister, a minister of the state, V.K. Singh, who is in charge of the Ministry of Transport. They've all been present over there. They have been taking review regularly, timely, and we are slowly and steadily reaching the end mark where our workers are. So 1.2 meters is the small distance that we are yet to traverse. Yes, I definitely agree with you. But my only suggestion is that even at this stage, I am not saying to abandon the machines which are presently employed, but we can consult the metro rail engineers. Right. Maybe at this stage, at this final stage, they may be able to come out with some viable solution for quick relief. The idea now is quick relief. Secondly, I would like to say that as per the disaster management norms, VIPs should not be visiting the disaster location, because the attention of the responders gets diverted and hindered. Okay. Their work stops, and I would appeal to all the VIPs and VVIPs to leave the workers to do their best, and so that they can get the 41 people trapped in the tunnel to be brought them out as soon as possible. Absolutely. Yeah. I also have with me Dr. Anil Goyal. He is the secretary of the IMA. Dr. Goyal, it's the most strenuous, most difficult situation that these 41 individuals find themselves in. As much as it is a mental battle, it is also their physical health that is at strain. The fact that you've only been able to get food and water just a few days ago, the fact that you've only been able to get medical supplies just a few days ago, the fact that you have to defecate in that small area of 6 meters or so is also then not a conducive, hygienic place to be living in for such a long period of time. So, as you have very rightly pointed out, there are physical aspects, there are psychological aspects of remaining in that 6 feet area for 13 days now, and then hoping against hope every day that everything will be all right. The best part here is that the Chief Minister talking to the trapped workers that they are safe, we are just about to reach them, but certainly
there may be gastroenteritis outbreak, there may be problem of exhaustion, there may be problems of dehydration, there may be problems of psychological exhaustion. So everything I think is being taken care of by better or proper communication by the authorities concerned. And I was very happy to see one phase when the flexible camera as we use like endoscopic camera was put into that tunnel, and one person could be seen popping in that camera. And that is very, very satisfying to me as a doctor and as a countryman, that he was looking quite healthy and hale and hearty. So that means they are in good spirits. Psychologically, they are good, but certainly a hygienic issue I am not able to understand in that 6 feet. Then there is the issue of urination, defecation, and then how are they managing? I think when they come out, then only we'll be able to know. Yeah. But certainly, there are lots and lots of efforts are being done by the government. But also, I would say kudos to those trapped workers that they are keeping their spirits high and managing well. And this I'm saying because of when I saw that photo through the flexi camera on your TV channels the other day. Right. And I hope also, for the best. Now what are the kind of preparations that the doctors and the hospitals will have? What is the possibility of the kind of diseases, ailments, or the fact that they have been staying over there? They must be dehydrated. There has been no light, so no vitamin D. What are the possibilities of the kind of diseases or ailments they might contract in while they are inside the tunnel? First and foremost would be infections, and then infections may be starting from skin infections, and then going on to the gastrointestinal infections, eye infections, and respiratory infections. All kinds of infections will be there because they are traumatized people, they have poor immunity, so all kind of viral and bacterial infections, they may be suffering already actually. And then, as you said, that 41 stretchers, ambulances and medical team doctors are there preparing for keeping their health in a good condition next few days. So preventing infection will be one. Then second part is dehydration, exhaustion will be second. Third part will be the psychological aspect, psychological impact, the trauma they have suffered. And you can't imagine that those psychosomatic issues, some of them may become very aggressive, some of them may become very depressive. So that part of, so I hope the psychiatrists and they must be, and psychologists must be there already waiting for them. So infections of every part of the body, that is one. Second is psychological aspect. Yeah. And then infection, as I said, from the top to bottom, starting from eye, nose, respiratory, lung infection. And suppose they already have some kind of a disease already, like diabetes, hypertension, or cardiac disease, they would put. Right. Thank you, Dr. Goyal, for giving us that insight. Let's quickly also listen into this this soundbite that is coming in from the rescue site. I have, I think, Cyriac Joseph. He's the MD and CEO of Squadron Infra Mining Private Limited. This is on the drone technology that is being used in the rescue operation. Let's quickly listen into what he says. Experts in using drone technology, and this technology is a new technology है जो underground और GPS denied areas, मतलब underground tunnels और underground mines में use करता है. Mainly mine safety के लिए mine tunnel audit है, ऐसे safety का तरफ से use हो रहा है. तो उसमें इंडिया में भी अभी recently introduce किया है. हमारा बहुत सारा tunnels है, बहुत सारा underground mines अभी तक पहुंचा नहीं है. But Hindustan Zinc Limited, आप जानते होंगे वेदांता ग्रुप का, so they were the ones who first actually embraced technology का बहुत ध्यान दिए हुए they इस्तेमाल करेंगे, and they are really appreciating this technology. यहाँ जो सर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें आप किस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान हो और जो रेस्क्यू टीम है उसे मदद मिल सके?
देखिए, ऐसा वाला ऑपरेशन क्राइसिस में एक तो हमारा टारगेट है कि 41 जनों को कैसे हमारा सेव करके बाहर निकल के आएंगे, और सेकंड थिंग है उसके कितना जल्दी से आना है, जल्दी से लाना है। ओके, उसके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, चाहिए उसका जियो टेक्निकल और उसका उसका मॉडल, उसका जो भी डाटा है वो सब चाहिए। उसके अलावा वो रेस्क्यू टीम का सुरक्षा वो भी इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। All right, so that is very important, crucial piece of information coming in from the rescue site. This gentleman who is the managing director of Squadron Infra Mining Private Limited, they provide this drone technology. What this drone technology does is it sends out drones to navigate and then zero down on, by way of GPS tracking, zero down on the subjects, the targets over here, the 41 workers, and also find out what exactly, maybe even by pictorial representation, by way of catching videos or pictures and then bringing back those visuals to the rescue operation workers or officials. All right, back with me is my colleague Praveen Kumar. Praveen, we heard it from the drone technologies over there. So he was very specific about how this is then going to rapidly help in getting in touch with the workers, in finding out what their ground situation is at the moment, because thus far we've only been able to see perhaps a couple of these workers through the tunnel. We've still not been able to actually have a look at the entire set of 41 individuals that are trapped. देखिए, जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको खाना पानी और दवाइयाँ पहुँचाई जा रही है। प्राथमिकता ये है कि उनको जिंदा रखा जाए और उनको पूरी तरह से वो बीमारी से दूर रखा जाए, उसके लिए दवाई भी दी जा रही है। समय समय पर जो मनोचिकित्सक हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो काम चल रहा है, अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ पे आए हुए, दुनिया के जो अच्छे एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे ड्रोन के हों या फिर टनल विशेषज्ञ हों या फिर दूसरे विशेषज्ञ हों, वो सभी मौजूद हैं और उनकी देखरेख में ये जो है रेस्क्यू का काम चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतने एक्सपर्ट के रहते हुए अगर इतनी मुश्किल आ रही है तो कितना मुश्किल भरा ये ऑपरेशन है और किस तरह की बाधाएँ हैं। देखिए, कई जो है प्लान पे काम किया गया। एक प्लान के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक अंदर में ऑगर मशीन लगी है, ऑगर मशीन से ड्रिल किया जा रहा है। आप जब इस टनल के ऊपर देखेंगे तो आपको लाइट दिखेगी। जो जहाँ लाइट दिख रही है, दरअसल उसको वहाँ तक एक सड़क पहुँचाया गया है। सड़क इसलिए पहुँचाया गया है क्योंकि ऊपर से वर्टिकली एक प्लान ये भी है कि अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है तो ऊपर से वर्टिकली ड्रिलिंग किया जाए और वहाँ से एक तरह से बोरिंग, जिसको हम आम तौर पे कहते हैं, करके नीचे जो है पहुँचा जाए। लेकिन इसमें भी कई दिक्कत आई। जो सर्वे की टीम थे, जो सर्वे हुआ है, उसके बाद जो एक्सपर्ट थे, उसमें भी दिक्कत आ रही। दिक्कत ये आ रही है कि ये मिट्टी जो है, मिट्टी का पहाड़ है। अगर बोरिंग करते समय कंपन ज़्यादा होगा तो ये और भी दूसरी जगह ढहने और धंसने की संभावना है। दूसरी बात कि जो टनल के चारों बगैर लोहे और सरिये के फ्रेम लगाए गए हैं, ड्रिलिंग कर भी दिया जाता तो फिर वहाँ पे उन सरियों को काट कर नीचे आना होगा, जो कि बहुत खतरनाक है क्योंकि कंपन होगा और कंपन की वजह से जगह जगह धंसने की संभावना हो जाएगी। हमारे पास जो खबर है कि जिस तरह के पोर्शन ये थे, जो 60-61 मीटर के जो पोर्शन है, इस तरह के अंदर भी 2-3 और जगह है जहाँ पर इस तरह की स्थिति है। वहाँ की जो मिट्टी लूज है और बीच बीच में हल्के हल्के मलबे आ रहे थे, तो वहाँ पर भी उसको भी ट्रीटमेंट किया जा रहा था। तो कई प्लान पे एक साथ काम हो रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा नज़दीक और सबसे ज़्यादा सटीक प्लान है वो यही है कि ऑगर मशीन से ड्रिल करके पहुंचा जाए। बहुत दूर नहीं है, रेस्क्यू की टीम बस महज 10 या 11 मीटर दूर है। जो लोग अंदर ट्रैप्ड हैं उनको निकालने के से तकरीबन 10-12 मीटर ही दूर है। और अगर ये सक्सेस हो जाता तो निश्चित तौर पर कल के आसपास, कल या कल दोपहर के आसपास जो है सभी रेस्क्यू की टीम वहाँ पर पहुँच जाएगी
और जी, जो बिल्कुल, कई बिल्कुल. दिनों Thank से you. चाहे 13 Thank दिनों you, से Praveen, for giving us those updates. I'll keep coming back to you as and when there are breakthroughs and more developments that take place on the site. Dr. Goyal, coming back to you again. So, like you said, psychological strength is of utmost importance. We were also getting to know that these workers have been provided with these small games, like, they've been given these playing cards just to keep themselves involved and not to stress themselves with the situation at hand, just to distract them from this unsurmountable situation they've caught themselves in. So, Meghaji, you need to understand that these people are in a claustrophobic environment. It's a very small space and 41 people are there eating and discharging their urine and stools. In that environment, it is absolutely traumatic, devastating to physically and psychologically both. So the communication is the key, as you are showing the CM Dhami talking to them, and then giving them playing cards and all. But still, there is lots and lots of trauma going on in their minds. So definitely there is damage. And then second part also, we need to understand there is oxygen shortage. There must be hypoxia. Some kind of hypoxia should also be there to these individuals. So you can't have proper oxygen to breathe in. So I'm not sure what effect it will have when they come out. But we all know when there is hypoxia, there is lung damage, there is brain damage, there is injury to the heart, and cellular damage at the cellular level. Right. So absolutely. I think we need to understand everything in totality. So all those aspects are going to be reviewed by the doctors who are being put in place at the rescue site. Quickly, Krishna Mitru, just one last word before I wrap this up. Situation as of now, perhaps, not just perhaps, this has been the most difficult rescue operation. Are there some takeaways that the NDRF and the NDMA are going to take from this operation? Yes, there will be a lot many lessons to learn from this operation, because there have been a number of tunnel collapses so far within our country, but this operation seemed to have lasted the longest, posing maximum hurdles and perils, and multiple rescuers have been invited to alleviate the problems that we are having in various aspects of recovery. We will have a lot of lessons learned, and I would only request authorities at the state and all over the country, not only Uttarakhand, because this can happen anywhere. I would request all the authorities at state level, at the district level, and more so at the central level, including autonomous bodies like NDMA, to very seriously take the subject of not allowing this to reoccur. Absolutely. Because Absolutely. I'm sure people abroad, knowing this, that we have taken 13 days for this recovery, I don't know what they must be thinking of our capabilities. But there have been a lot of these incidents across the globe, whether it is Thailand. I was reading these reports. There was an incident in China. In fact, several of the workers who were stuck in that tunnel in China several years ago, I think half of them died. There has been a very famous movie that has been made about this canyon in the United States of America, and it took 127 hours for this mountaineer to then, he could not even get help. He had to amputate himself. He was stuck in a rock, and a miraculous escape is what I would say. His tenacity, his patience, his grit is what that came to fore. But okay, all right. Thank you all for joining me on the telecast. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.